आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 331 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 331 यहाँ पे क्या बोला, ट्रू अबाउट मॉन्डोर डिजीज़। ट्रू अबाउट मॉन्डोर डिजीज़ क्या होती है? ऑप्शन 1 सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इट इज़ सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ऑप्शन 2 lymphatic infiltration tumor cells. Lymphatic infiltration tumor cells. Tumor cells. Option 3 cord-like appearance of subcutaneous vein. Cord-like appearance of subcutaneous veins. Subcutaneous veins. Option 4 occurs all over the body. Occur all over body. फिर से देखिए, ट्रू अबाउट मॉन्डोर डिजीज इज सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन ट्यूमर सेल्स, कॉर्ड लाइक अपीयरेंस ऑफ सबक्यूटेनियस वेन, ऑकर ऑल ओवर द बॉडी। एंड द राइट आंसर इज ए एंड सी। ए एंड सी। मॉन्डोर डिजीज इज सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड इट इज कॉर्ड लाइक अपीयरेंस ऑफ सबक्यूटेनियस वेन्स। क्वेश्चन नंबर 332 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 332, young female present with hypertension with urinary VMA more than 14 milligram per deciliter associated with। तो young female with hypertension with urinary VMA more than 14 milligram per deciliter is associated with option 1 medullary carcinoma thyroid, medullary carcinoma thyroid. Option 2 von Hippel-Lindau disease, von Hippel-Lindau disease. Option 3 Sturge-Weber syndrome, Sturge-Weber syndrome. Option 4 grave disease, grave disease. Option 5 neurofibromatosis, neurofibromatosis. फिर से देखिए, यंग फीमेल विथ हाइपरटेंशन विथ यूरिनरी VMA मोर देन 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज एसोसिएटेड विथ medullary carcinoma thyroid, von Hippel-Lindau disease, Sturge-Weber syndrome, Graves disease या neurofibromatosis. And the right answer is A, B, C and E. A, B, C and E. ग्रेव डिजीज नहीं होते, लेकिन medullary carcinoma thyroid, VHL, Sturge-Weber syndrome और neurofibromatosis के साथ ही एसोसिएटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 333 देखेंगे। क्वेश्चन 333, ट्रू अबाउट सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। True about soft tissue sarcoma क्या होती है? ऑप्शन 1 lymphatic spread, lymphatic spread. Option 2 enlarged size, enlarged size. Option 3 pseudo encapsulated, pseudo encapsulated. Option 4 spread through musculo-aponeurotic plane, spread via musculo-aponeurotic plane. फिर से देखिए, ट्रू अबाउट सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा इज lymphatic spread, enlarged size, pseudo encapsulated या spread via musculo-aponeurotic plane. And the right answer is B, C and D. B, C and D. So soft tissue sarcoma, there is enlarged size, pseudo encapsulated and spread via musculo-aponeurotic plane. क्वेश्चन नंबर 334 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 334 क्या पूछे? ट्रू इंक्रीज इन आईलेट सेल। ट्रू अबाउट इंक्रीज इन आईलेट सेल्स कहाँ पे मिलती है? ऑप्शन 1 नेसिडियोब्लास्टोमा, नेसिडियोब्लास्टोमा. ऑप्शन 2 टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस. या नंबर 3 इंसुलिनोमा, इंसुलिनोमा. ट्रू अबाउट नहीं है. इंक्रीज इन आइलेट सेल कहाँ मिलती है? नेसिडियोब्लास्टोमा, टाइप 2 DM या इंसुलिनोमा. एंड द राइट आंसर इज ए एन सी. नेसिडियोब्लास्टोमा इंसुलिनोमा मिलती है. नेसिडियोब्लास्टोमा और इंसुलिनोमा मिलती है. क्वेश्चन 335 देखेंगे.
क्वेश्चन नंबर 335, ठीक है ना। AV फिस्टुला कॉजेस, AV फिस्टुला causes, AV fistula causes. Option 1, congestive cardiac failure. Congestive cardiac failure. Option 2, local gigantism. Local gigantism. Option 3, endocarditis. Endocarditis. Option 4, local ulceration and hemorrhage. Local ulceration and hemorrhage. Option 5, closes spontaneously. Closes spontaneously. फिर से देखिए, AV fistula causes congestive cardiac failure, local gigantism, endocarditis, local ulceration and hemorrhage, or closes spontaneously. And the right answer is A, B and D. A, B and D. That is congestive cardiac failure, local gigantism and local ulceration and hemorrhage. क्वेश्चन नंबर 336 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 336 क्या पूछ रहे? अ पेशेंट हैविंग मल्टीपल गॉलस्टोन एंड CBD शो 8 मिलीमीटर डायलेटेशन, 4 स्टोन्स इन CBD. द बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी आर. तो पेशेंट विथ मल्टीपल गॉलस्टोन and CBD 8 millimeter dilated, 8 millimeter dilated, ठीक है ना, and 4 stone in CBD and 4 stones, ठीक है ना. the best treatment क्या होगी इस पेशेंट में? ऑप्शन 1, कोलेसिस्टेक्टमी विथ कोलेडोकोलिथोस्टोमी डन एट सेम सिटिंग. कोलेसिस्टेक्टोमी with lithotomy done together. Option 2, ESWL. Option 3, cholecystectomy and wait for ERCP. Cholecystectomy and wait for ERCP. Option 4, sphincterotomy and then cholecystectomy. Sphincterotomy followed by cholecystectomy. Option 5, cholecystectomy and after 14 days sphincterotomy done. Cholecystectomy, then 14 day later sphincterotomy. फिर देखिए, patient with multiple gallstone and CBD 8 millimeter dilated and 4 stone. Best treatment is cholecystectomy with choledocolithotomy done together. ESWL, cholecystectomy and wait for ERCP. Sphincterotomy followed by cholecystectomy. Cholecystectomy 14 days later sphincterotomy. And the right answer is option 1. That is cholecystectomy with choledocolithotomy done together. Question number 337 देखेंगे. Question number 337. Pancreatitis is caused by. Pancreatitis caused by. Option 1, ascending cholangitis. Option 2, increased PTH. Option 3, CBD stone. Option 4, alcohol. Option 5, starvation. फिर से देखिए, पैनक्रेटाइटिस इज कॉज्ड बाय ascending cholangitis, hyperparathyroidism, CBD stone, alcohol या starvation. And the right answer is ABCD. That is pancreatitis is caused by ascending cholangitis, hyperparathyroidism, CBD stone and alcoholism. Question number 338. Treatment of rib fracture. Treatment क्या है? ऑप्शन 1, इमीडिएट थोरैकोटोमी. ऑप्शन 2,
IPPV. IPPV. Option 3 analgesics. Analgesics. Option 4 strapping. Strapping. Option 5 ICWSD. ICWSD. फिर से देखिए ट्रीटमेंट, रिफ्रैक्चर ट्रीटमेंट, इमीडिएट थोरैकोटोमी, IPPV, एनाल्जेसिक, स्ट्रैपिंग, ICWSD, and the right answer is B and C. B and C, that is IPPV and analgesic. Refracture treatment is IPPV and analgesics. Question number 339 देखेंगे. Question number 339 about hemothorax. तो true about hemothorax. True about hemothorax. Option 1 seen in choriocarcinoma. Seen in choriocarcinoma. Option 2 supine posture is better than erect posture. Supine posture is better than erect posture. Erect posture. Option 3 the needle aspiration may be needed for diagnosis. Needle aspiration needed for biopsy, for diagnosis. Option 4 thoracotomy is always done. Thoracotomy always done. फिर से देखिए ट्रू अबाउट हीमोथोरैक्स. सीन इन कोरियोकार्सिनोमा, सुपाइन पोस्चर इज बेटर देन इरेक्ट पोस्चर, नीडल एस्पिरेशन नीडेड फॉर डायग्नोसिस, thoracotomy always done, and the right answer is B and C. B and C, that is supine posture is better than erect posture and needle aspiration is needed for diagnosis. Question number 340 देखेंगे. Question number 340 CBD stone may present with. CBD stone may present with. CBD stone may present with. Option 1 increased bilirubin. Increased bilirubin. Option 2 increased WBC count. Increased WBC. Option 3 increased liver enzyme. Increased liver enzyme. Option 4 fever with rigors. Fever with rigors. Option 5 hepatomegaly. Hepatomegaly. फिर से देखिए CBD stone may present with increased bilirubin, increased WBC, increased liver enzyme, fever with rigors, hepatomegaly, and the right answer is ABCD. ABCD. Increased bilirubin, increased WBC, increased liver enzyme, fever with rigors. Question 341 देखेंगे. 341 CA breast stage 1 and 2 managed by. CA breast stage 1 and 2. Stage 1 and 2 management. मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे. ऑप्शन 1 टोटल मैस्टेक्टमी. टोटल मैस्टेक्टमी. ऑप्शन 2 मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी. मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी. ऑप्शन 3 लंपेक्टमी एंड एक्सिलरी क्लियरेंस. लंपेक्टमी एंड एक्सिलरी क्लियरेंस. ऑप्शन 4 lumpectomy, axillary clearance and radiotherapy. Lumpectomy, axillary clearance and radiotherapy. This is CA stage 1 and 2 management. Total mastectomy, modified radical mastectomy, lumpectomy with axillary clearance, lumpectomy with axillary clearance with radiotherapy. And the right answer is all of the above. All of the above. हर तरीके से किया जा सकता है. Question 342 देखेंगे. Question 342 Elias sphincter is relaxed by. Lower esophageal sphincter relaxed by. Relaxed by. Option 1 nitrates. Option 1 nitrates. Option 2 H2 blocker. Option 2 H2 blocker. Option 3 morphine. Option 3 morphine. Option 4 atropine. Option 4 atropine. Option 5 calcium channel blocker. Calcium channel blocker. फिर से देखिए Elias is relaxed by nitrates, hydrogen blocker, morphine, atropine, calcium channel blocker, and the right answer is A, D and E. A, D and E. That is by nitrates, atropine and calcium channel blocker.
नाइट्रेट्स, एट्रोपिन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।